Hello and welcome everyone. And this is 11th class stream. Last class we discussed about all the political rights or fundamental right of the human. We discussed how the fundamental rights work, and today we are going to discuss our last right, which is basically right of constitutional remedies. I explained you the few points in the last class that what is right to constitutional remedies, that if anyone is harming your fundamental right, you can directly go to the Supreme Court or High Court to defend your fundamental right. That is supposed to be the right to constitutional remedies. How the right to constitutional remedy works, we will discuss today. The first is writing alone is not enough. The Dr. Ambedkar, another constitutional who was the person who was framing the constitution, think that writing the fundamental right will be not enough. There should be the protection of the fundamental right. If you will not protect fundamental right, anyone can change or erase the fundamental right from the constitution. So surety of practice, that whatever type of the government will be occur laterly, means in the democracy there will be no monarchy of course in the constitution, but if there will be any change in the democracy, that there will be a surety to follow the fundamental right. And how you can make sure that fundamental right should be always implemented, you supposed to give a defend against the attack. Means if there is any kind of the rules government try to framing against the fundamental rights, there's supposed to be authority to stop that. So to create that kind of the surety, there was many provision in that. For this, Ambedkar also said that right to remedies is a heart and a soul of the constitution or the fundamental right. How? Because if there will be no constitutional remedies right, you can use your fundamental right. Government can pass any act and demolish your right, or stop to enforcing or stop using the fundamental right. But if there is a right to remedies, and if you are feeling that government passed a law which is against the fundamental right, you can defend your right in the court. Last year there was a example of Article 370. If you want to understand this, go and read about the Article 370, that the government was trying to change the Article 370, but Supreme Court gave the judgment that the Article 370 is according to the privacy of the person, and that's why it's supposed to be changed, and a person privacy is supposed to be the private area. It's not supposed to be harmed by the government. So you can have a look on that if you want to understand that. If you don't want to look, don't look, because it is not compulsory for the CBSE. But right to remedy is basically the right which will explain you how you can protect your right. तो हम right to remedies में हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बहुत सारे राइट दिए गए हैं, ये कहा गया कि सिर्फ लिख देने से उनसे किसी प्रकार का कोई बेनिफिट नहीं होगा जब तक ये श्योरिटी ना की जाए कि उनको डिफेंड कैसे किया जाए, या गवर्नमेंट कोई ऐसा लॉ बना देती है जो हमारे फंडामेंटल राइट के खिलाफ जाए तो उसको कैसे स्टॉप किया जाए. इसीलिए अम्बेडकर ने इस राइट को हमारा सोल और हार्ट बोला है, क्योंकि इसके जरिए हमारे बाकी सारे फंडामेंटल राइट स्टैब्लिश होते हैं. सो नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट कैन गिव डायरेक्शन टू द गवर्नमेंट टू एनफोर्स द राइट इफ देयर विल बी एनी change in the laws, or the government is trying to change certain things related to the fundamental rights. So Supreme Court and High Court can give the direction to the government to enforce the right. So Supreme Court can directly give the order to the government that they supposed to enforce the fundamental right. Means they can't pass anything which is against the fundamental right. Like if government is in some states, I forget, the government was trying to implement that everyone should be do the Surya Namaskar, and there should be a Gita book in the school. So that was an information which is particularly based on the religion, that was against the right to religion. ये गवर्नमेंट क्या कर रही थी, ज़बरदस्ती क्या कर रही थी, सूर्य नमस्कार और गीता को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश कर रही थी. तो वो रॉन्ग था, क्योंकि वो राइट टू रिलीजन के अगेंस्ट जाता है. गवर्नमेंट, और हमारा कंट्री क्या है, सेकुलर कंट्री है, एंड बिकॉज वी आर द सेकुलर कंट्री, so we can't do anything which is in the support of the certain religion. किसी भी एक रिलीजन के लिए हम कुछ भी सपोर्टिंग में कुछ भी नहीं कर सकते. तो इसलिए वो क्या फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, क्योंकि हर किसी को अपने रिलीजन फॉलो करने का अधिकार है. और अगर आप सभी पर सूर्य नमस्कार फोर्स करोगे तो वो हिंदुइज्म का इन्फॉर्मेंस हो जाएगा अदर रिलीजन पे, अगर सूर्य नमस्कार को ज़बरदस्ती फोर्स किया जाता है. तो इस वजह से गवर्नमेंट ने क्या किया, उस चीज़ को स्टॉप कर इम्पोज करने की कोशिश की. तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको स्टॉप किया कि ये अदर रिलीजन पर हिंदुइज्म के इन्फॉर्मेंस
रिक्वायरमेंट्स हैं, इसलिए इसे स्टॉप किया जाए। तो इस तरह से जब गवर्नमेंट किसी प्रकार के स्पेशल ऑर्डर्स निकालती है जो हमारे फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए होते हैं, दैट स्पेशल ऑर्डर इज नोन एज रिट्स। सो बेसिकली व्हाट इज रिट्स? द गवर्नमेंट sometimes, sorry, not government, sometimes the Supreme Court or the High Court will pass a order to protect our fundamental right. That special orders is known as writs. कि कभी कभी क्या होता है कि गवर्नमेंट अगर कोई रॉन्ग डिसीजन लेती है जो हमारे फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है, तो कोर्ट क्या करता है, उससे हमें बचाने के लिए सर्टेन स्पेशल ऑर्डर को पास करता है, और उसे हम क्या बोलते हैं? रिट्स बोलते हैं। ठीक है, तो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ क्या है? हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ है व्हेन वी हैव द राइट to file a case against any law which is breaking or which is enforcing or which is changing your fundamental rights. According to the writs, we have certain writs which you supposed to know. There will 5 writs in mentioned in your book. First one is habeas corpus. What is habeas corpus? A writ that require a person who has been arrested or imprisoned to brought to the judge or into. It's a kind of order. See, what is your right? Your first right is your freedom. So what is freedom? That you are free to move wherever you want to move or whenever you want to move. So if someone if a police person came to your home and he just want to arrest you, this is against your freedom, against your right of freedom. So to break that freedom, he's supposed to need a order, a arrest warrant to arrest someone. Okay, it's supposed to be arrest warrant or is supposed to be a releasing order also. गवर्नमेंट किसी भी जो कोर्ट है वो किसी भी तरीके से 2 ऑर्डर डाल सकती है। फर्स्ट हो सकता है क्योंकि आपकी राइट टू फ्रीडम के अगेंस्ट है, आपको अरेस्ट करना और बंदी बना के जेल में डालना, तो उसके लिए जो पुलिस आएगी आपको अरेस्ट करने के लिए, उसके पास एक अरेस्ट वारंट होता है जो कि हैबियस कॉर्पस है। या फिर आप ऑलरेडी पनिशमेंट में हैं जेल में, तो आपको फ्री करने के लिए भी कोर्ट क्या है, एक हैबियस कॉर्पस जारी कर सकती है। सेकंड है आपका मेमेंडस बेसिकली क्या होता है कि इशूड बाय द सुपीरियर कोर्ट टू कंपेल अ लोअर कोर्ट ऑफ अ गवर्नमेंट ऑफिसर टू परफॉर्म मैंडेटरी और प्योरली मिनिस्ट्रल ड्यूटीज़ करेक्टली। कि ये किस लिए बनाया जाता है कि कोर्ट इशू कर सकते हैं इस चीज़ को कंपेल करने के लिए किसी लोअर कोर्ट को और द गवर्नमेंट ऑफिसर, या तो लोअर कोर्ट के लिए होगा या गवर्नमेंट ऑफिसर्स के, किस लिए? टू परफॉर्म मैंडेटरी एंड प्योरल मिनिस्ट्रल, जो भी उसकी ड्यूटीज़ है, चाहे वो कोर्ट है या कोई पब्लिक ऑफिसर्स है या गवर्नमेंट ऑफिसर या सर्विस है। मान लीजिए कोई IAS IPS ऑफिसर है एंड ही इज़ नॉट डूइंग हिज ड्यूटी, सो कोर्ट कैन पास अ लॉ to force him to do his duty. So mandamus is basically a law which is used, or a writ which is used by the court to force someone if the person or the organization like court is not following his duties. Okay, to force them to follow their duties. The third is prohibition. What is prohibition? Means directing the subordinate to stop doing something is law prohibited. What is prohibition? Means the directing subordinate means we have district courts and then we have subordinate court in the district, also high court. So supreme is supreme, our Supreme Court, and then we have High Court, and then we have a lower court. So our High Court, then our Supreme Court, we have Supreme Court, then we have a High Court, then we have District Court, and then we have subordinate court in the district. If something which is not in under the High Court and they are taking a decision which is not according to law, Supreme Court can stop the High Court to take that kind of the decision. That is called prohibition. Prohibition का मतलब क्या होता है? वैसे भी रोक लगाना होता है. So that is basically directing a subordinate, means a subordinate court to stop doing something which is law prohibition, which is not according to the law. If any court is taking a decision which is not according to law or against the law, so Supreme Court can stop the court or the organization to take that kind of the decision. That it is often used to Supreme Court to the lower court to direct is not proceed with the case which does not fall under the judicial, and also basically it is used to stop the High Court to take the decision on the cases which are not under the judication, which is are not under the judiciary. So that is the also third read. The fourth is basically quo warranto. What is quo warranto? It's used to test the personal legal right hold an office. So according to the quo warranto, government can check that if someone is holding a office or a kind of organization or whatever he is holding, the person supposed to have legal authenticity of that. Have a look of the medical. If someone is opening a medical, that person supposed to have a qualification of the D Pharma, as well as the person supposed to have a certificate of opening the medical shop.
So that is the, if the person is not doing these things, that kind of the writ can pass by the court. Later it was basically it is used to test a person legal right to hold an office, not to evaluate the personal performance in the office. For example, a quo warranto action may be brought to determine whether a public official satisfy the requirement or that she रिक्वायर्ड टू ओपन दैट ऑफिस। आगे कंटिन्यू नहीं किया है, हम सो सॉरी यहाँ पे। सो बेसिकली क्या है कि कोई भी जो पब्लिक ऑफिशियल्स है या कोई पब्लिक ऑफिस है या कोई भी जो ऑफिस आप होल्ड करना चाहते हैं उसके लिए सर्टेन जो गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट्स है कि आपको ये चीज़ रिक्वायर्ड होनी चाहिए। जैसे कोई अगर स्कूल ओपन करना चाहता है, फॉर स्कूल सर्टेन नॉर्म्स है कि आपके पास इतनी लैंड होनी चाहिए, आप इतने कमरे बनवाएंगे, आप फायर अलार्म्स वगैरह लगवाएं, ये फैसिलिटी स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करें, डेस्क्स होनी चाहिए, फ़ैन होनी चाहिए। तो जो भी लीगल नॉर्म्स उसके अकॉर्डिंग बना रखे हैं उस ऑफिस के लिए, if you are fulfilling that law, then you are eligible to open that office or school. If you are not, you are not. And against that the quo warranto can be passed to stop टू ओपन दैट काइंड ऑफ द ऑफिस। तो quo warranto एक ऐसा ऑर्डर है जो आपको कोई भी लीगल ऑफिस, जो लीगली जो राइट है आपका मतलब कोई भी ऑफिस खोलने का, लेकिन जो पर्टिकुलर कंडीशन है उस ऑफिस को खोलने के लिए, अगर आप उसको फुलफिल नहीं करते तो उसको स्टॉप करने के लिए यूज़ किया जा सकता है। लास्ट है आपका सेरिटोरी। व्हाट इज सेरिटोरी? द वर्ड सेरिटोरी केम्स फ्रॉम द लो लेटिन, मीन्स बी मोर फुली इन्फॉर्म्ड, a writ of the salutary order to lower court to deliver the record in a case so that high court may review it। कि it is ये बेसिकली किस चीज़ के लिए यूज़ किया जाता है? माइट बी देर इज अ केस इन अ हाई कोर्ट इज डीलिंग द केस, बट सुप्रीम कोर्ट फील दैट केस सपोज टू बी डील बाय द सुप्रीम कोर्ट, नॉट द हायर कोर्ट, बिकॉज इट्स नॉट अ इशू ऑफ दैट स्टेट, इट इज़ अ इशू ऑफ ऑल द नेशन। कि कोई ऐसा केस हो जिसमें हाई कोर्ट कोई डिसीजन लेना चाहती हो, लेकिन बेसिकली क्या हो कि वो पूरे देश को इफेक्ट कर रहा हो, तो सुप्रीम कोर्ट को लगे कि वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट के अंदर होना चाहिए या सुप्रीम कोर्ट को उसके बारे में सोचना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उस केस को अपने पास मंगा सकती है रिव्यू करने के लिए, एज वेल उसको स्टॉप करके बीच में भी बुला सकती है। तो इस चीज़ को हम क्या बोलते हैं? सेरिटो। ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया भी है, बहुत बार किया है। कुछ आर्टिकल्स पे हाई कोर्ट ने डिसीजन दिए हैं, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिव्यू डिसीजन किया। जो मैं आर्टिकल 370 के बारे में बता रहा था, वो आर्टिकल 370 भी पहले दिल्ली हाई कोर्ट ने उसके ऊपर डिसीजन दिया था, एंड लेटरली दैट वाज रिव्यूड बाय द सुप्रीम कोर्ट। और अब जो ऑर्डर है वो सुप्रीम कोर्ट के फॉलो किए जाते हैं। तो अगर सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि हाई कोर्ट में कोई ऐसा मैटर है जो हाई कोर्ट के अंडर एरिया से बाहर है, पूरे नेशन को इफेक्ट करता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या कर सकती है? उसको रिव्यू कर सकती है, एज वेल उसको अपने अंडर बुला के उसके डिसीजन ले सकती है। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि दीज आर द ओनली थिंग्स टू प्रोटेक्ट आवर फंडामेंटल राइट, देयर आर अदर थिंग्स टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट, लाइक नेशनल कमीशन ऑफ द माइनॉरिटीज टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द माइनॉरिटी, नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ द वुमेन, नेशनल कमीशन ऑफ द शेड्यूल कास्ट टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ शेड्यूल कास्ट। सो दिस काइंड ऑफ द कमीशन इज ऑल्सो फॉर्म्ड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट द फंडामेंटल राइट्स, बिकॉज वी नो दैट इफ देर विल बी नो फंडामेंटल राइट्स, so there will be no one will value the democracy. In democracy you're supposed to have fundamental rights, so that's why there is a many organization also to promote the fundamental right. Our next topic is directive principle of the state policy. What is directive principle of the state policy? See, many challenges of the Indian democracy. When we got freedom, there was many challenges to the Indian democracy, many problems was there in India, but before the most important was equality and well-being of the people. Why? Because there was discrimination in the India, people was poor, they was not having land, and British government basically exploited related to the tax and trade, every perspective, agriculture also, every perspective was exploited by the British government. So there was a problem of equality and well-being of the Indian people. To promote that equality and to create a well-being of the people, the government supposed to work with the different perspective, food, that certain policy direction. So so for that government, ये food नहीं आना चाहिए, I'm sorry, there should be for that certain policy and direction supposed to be required, कि जो equality and well-being को हम promote करने की बात करें, उस चीज़ के लिए कोई policies वगैरह चाहिए थी। So but not bounded, but constitution, the person who, the people who was making the constitution, the framing the constitution, the intellectual leaders was not trying to bound the government according to that policies. Okay, they know that in future the situation will change and the government have to take the decision according to the present situation, but
they also want to give some kind of the guideline that's supposed to be followed by the government whenever they are planning something for the people's development, or whenever they are planning to make law for the people development, कि वो किसी law के according bound नहीं करना चाहते थे गवर्नमेंट को, लेकिन वो certain guidelines देना चाहते थे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, जो गाइडलाइन लीगल इन्फॉर्मेशेबल में नहीं है बट जो गवर्नमेंट है उनको यूज़ कर सके पब्लिक वेलफेयर के लिए, लॉ बनाने के लिए. व्हाट इज़ द लीगल इन्फॉर्मेशन मीन्स कि अगर इफ़ द गवर्नमेंट इज़ नॉट फॉलोइंग द गाइडलाइन, नॉट फॉलोइंग द डायरेक्टिव प्रिंसिपल, यू कांट गो इन टू द कोर्ट. आप कोर्ट में नहीं जा सकते उस चीज़ के लिए कि अगर वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल की गाइडलाइन को नहीं करती है, क्योंकि ये आपका क्या है, नॉन जस्टिएबल के अंदर आता है, इसको जस्टिस के अंदर नहीं जाना जाता. नॉन जस्टिएबल वो टॉपिक्स होते हैं जिसके लिए आप कोर्ट में नहीं जा सकते. पीपल विल होल्ड द गवर्नमेंट. ऑल्सो ये आइडिया इसलिए क्लियर था क्योंकि द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली वॉज टोटली श्योर दैट लेटरली द गवर्नमेंट वाज बी होल्ड बाय द पीपल, कि लेटरली क्या होगा, जो लोग होंगे वही कहीं ना कहीं आके गवर्नमेंट को होल्ड करेंगे, गवर्नमेंट को एस्टेब्लिश करेंगे, डेवलप करेंगे, गवर्नमेंट को बनाएंगे, तो इस तरह की कोई प्रॉब्लम उन्हें इशू में होगी नहीं. नेक्स्ट है व्हाट डू वी द डायरेक्टिव प्रिंसिपल कंटेन, कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल में है क्या. डायरेक्टिव प्रिंसिपल हैव थ्री बेसिक गोल. वन इज गोल ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, कि दैट आफ्टर फ्रीडम देयर वाज सर्टेन गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ द सोसाइटी, कि दैट व्हाट काइंड ऑफ द सोसाइटी वी हैव टू डेवलप, वेयर सपोज टू बी इक्वालिटी, नो डिस्क्रिमिनेशन, सो दैट काइंड ऑफ द सोसाइटी supposed to be developed. So directive principle is telling what kind of the society you supposed to develop, what is supposed to be the goal of the society. Okay, first and second, right other than the fundamental right. Directive principle also explaining that there should be certain other right which is not connected to the fundamental right, but there should be other right of the people, like you supposed to need a job, you supposed to wear clothes, you supposed to have certain facilities, public facility. This kind of thing is not in fundamental right, but these are necessity of the people and they supposed to be there. Third is policy that government should adopt. There should be certain policy that which government should adopt to develop the people. Also government done many things to develop this kind of thing, like zamindari bills was there, nationalized banks are there, enacting the numerous factories law, like factory laws was not there in the fundamental right. What kind of the factory law, that there should be a proper timing, there should be a holiday, the factory should provide sanitation, also provide houses to them, education to their children. This kind of the law is not according to your fundamental right, but laterally this kind of the law formed by the according to the directive principle. अगर आप किसी अभी फैक्ट्री को देखेंगे तो जिंदल फैक्ट्री है हिसार के अंदर, इफ़ यू हैव अ टेक एग्जांपल ऑफ दैट, सो दे विल प्रोवाइड द हाउस टू द वर्कर एज वेल एज एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, मेडिकल फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करते हैं. सो ये सारी जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करना, ये किसके अकॉर्डिंग आया, स्टेट पॉलिसीज़ के अकॉर्डिंग लॉज को फॉर्म किया गया. इसके अलावा फिक्स मिनिमम वेजेस, कोटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़ को डेवलप करना, प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन फॉर अपलिफ्टमेंट ऑफ शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब, कुछ ऐसे, ये भी डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग ही आता है आपका स्टेट पॉलिसीज़ में. कि वैसे तो एक्सप्लोटेशन के अकॉर्डिंग आपको सभी को इक्वल रखना था, पर इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब को स्पेशल रिजर्वेशन की ज़रूरत थी, तो उस स्पेशल रिजर्वेशन को प्रोवाइड किया गया है. तो ये थ्री गोल्स हैं आपके डायरेक्टिव प्रिंसिपल के, कि गोल और ऑब्जेक्टिव्स जो है सोसाइटी का क्लियर होना चाहिए, फंडामेंटल राइट के अलावा अदर राइट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए जाएं, और गवर्नमेंट कुछ ऐसी पॉलिसीज़ बनाए जिससे सोसाइटी की डेवलपमेंट हो सके. लास्ट है आपका आज के लेक्चर में फंडामेंटल ड्यूटीज़. इन 1976 42nd अमेंडमेंट देयर वाज आल्सो न्यू थिंग्स मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन. दिस वाज फंडामेंटल ड्यूटीज़. वी हैव 10 फंडामेंटल ड्यूटीज़ विच इज़ नॉट लीगली इन्फोर्स. लीगली इन्फोर्स का मतलब है कि आप अगर फंडामेंटल ड्यूटी नहीं फॉलो करते हैं तो उसके लिए आपको केस नहीं किया जा सकता है, आपको कोर्ट में नहीं ले जाया जा सकता. तो ये लीगली इन्फोर्स नहीं है. लाइक फंडामेंटल राइट, कि फंडामेंटल राइट को अगर कोई हार्म करता है तो आप उसके ऊपर केस कर सकते हैं, बट अगर कोई लीगल फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हार्म करता है तो उसके आप ऊपर केस नहीं कर सकते. तो ये लीगली इन्फोर्स नहीं है. और किस तरह की फंडामेंटल ड्यूटीज़ है हमारी, फ्यू एग्जांपल्स मैंने लिखे हैं. जैसे फर्स्ट वन इज़ आवर टू डिफेंड आवर कंट्री टू प्रमोट, कि अगर हमारी कंट्री के ऊपर कोई भी प्रॉब्लम हो रही है तो हमें उसको डिफेंड करने की ज़रूरत है. प्रमोट हार्मनी, कि अपनी पूरी कंट्री में हार्मनी यानी कि भाई बंधुत्व की जो ब्रदरहुड की जो फीलिंग है उसको कहीं ना कहीं ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करने के लिए. प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट. दिस इज थर्ड, दैट वी सपोज टू प्रोटेक्ट आवर इन्वायरमेंट बिकॉज फॉर द हेल्थी लाइफ यू सपोज टू नीड अ गुड काइंड ऑफ द इन्वायरमेंट. एंड द लास्ट वन इज नॉट कनेक्टेड विद द फंडामेंटल राइट. सो द फंडामेंटल ड्यूटीज आर नॉट कनेक्टेड विद द फंडामेंटल राइट. इट इज़ नॉट मेंशन इन द कॉन्स्टिट्यूशन दैट इफ यू विल फॉलो द फंडामेंटल राइट, फंडामेंtal duty, then you will get the right. Otherwise if you in the present scenario, if you have a look on any of the management of any kind of the organization,
you will know that first you have to follow the duties and then you will get the right. But for the fundamental duties and fundamental right, nothing is like that. अगर कहीं पे भी आप काम करते हैं तो आपको पता चलेगा कि सबसे पहले आपको अपनी ड्यूटीज़ करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपको कुछ राइट मिलते हैं. पर फंडामेंटल ड्यूटीज़ और राइट में ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है कि आप अगर फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करेंगे तभी आप फंडामेंटल राइट को यूज़ कर सकते हैं इंडिया के. नहीं, फंडामेंटल राइट आपके सेपरेट हैं, वो आपको मिले हुए हैं और फंडामेंटल ड्यूटीज़ को फॉलो करना आपकी चॉइस पे डाला गया है. बट इसके अंदर कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, जैसे एनवायरनमेंट और ब्रदरहुड की हम बात करें थे, तो ऐसी इंपॉर्टेंट ड्यूटीज़ को डाला गया है विच वी सपोज टू फॉलो, जो ऐसी ड्यूटी हैं जो हमें फॉलो करनी ही चाहिए. जब हम इन ड्यूटीज़ को पढ़ेंगे तो हमें समझ में आएगा कि वो हमारी मोरल एथिकल ड्यूटीज़ हैं जो हमें नेसेसरीली फॉलो करनी ही चाहिए. सो दैट वाज ऑल अबाउट दिस चैप्टर. इन द नेक्स्ट क्लास देयर इज़ फ्यू पॉइंट लेफ्ट वी विल डिस्कस, एंड थैंक यू सो मच. हैव अ नाइस डे. स्टे होम, स्टे सेफ.